What is up, riders? How you all doing? Hope you all are fit and fab. This is Saurabh and I welcome you to the channel. It's a fine afternoon indeed. You know, I've been riding this bike for about 6 months now and quite happy with its performance. There are a few things which could have been better, and one of them is the braking. I feel it's not quite effective and needs improvement, especially at higher speeds, and with no switchable ABS, one does miss the bite. So after reading online, I have decided that ceramic brake pads work well on any bike and I'm gonna give it a try. See if the braking improves. There's this Japanese brand called Vestra and I believe those are a much better option. So I'm going to the workshop right now and I'll get them installed. How are you? How are you? Very well, man. How's it going? Good. How's You it feeling better? Okay. Good. How come certain requirement of Bro, I feel that the braking is quite not adequate on this. So I'm looking to. pads are so absolutely okay in the front. Yeah, it's a new bike, so they should be. Exactly. They both are. That's what when you said, I said, okay, I think this is a conversation that we need to do in person. Because I'm quite sure the pads are not it's not worn out. Yeah, they aren't. But you're not. But then happy there's with no it. bite in it. And I've heard that Vestra pads are much better. Ceramic pads, for that matter, are much better. Nahi? They are, but I have to check the availability of Vesa. Okay. I'm recording also, by the way. Sorry. I'm recording also, if you don't mind. No, it's fine. These are the brake pads, Vestra. These are the ceramic brake pads, and I've heard the bite of these pads is really good. They are made in Japan. So they only have the rear brake pads right now. As and when they have the front brake pads in stock, I'll get those replaced too. ये पुराने ब्रेक पैड है. इनकी क्या कंडीशन है अभी? अभी तो ठीक है जी. एक बार दिखाना. ये किस कंपनी के है? हाँ. बस लग गए. इतनी देर का काम था बस. तो चलो ब्रेक पैड्स लग गए और 2 मिनट का काम था सारा. So they had only the rear brake pads. I should have called them first and checked if they have both front and the rear brake pads. So I called up Divya Bhai just now, who owns the mods, and he says he's got the front pads. उनकी वर्कशॉप से पहले भी मैंने काफ़ी काम कराया है. एक वीडियो लिंक कर देता हूँ यहाँ पर so that you all can watch. I'm gonna go there and get the front ones too. तो यहाँ पे मुझे फ्रंट पैड्स भी मिल गए हैं. ये पैड्स हमें 1300 के पड़ रहे हैं प्लस फिटिंग चार्जेस जो भी बनता है लेबर वगैरह. तो इन वाले पैड से बेटर है वेस्ट्रा के पैड्स? अरे बहुत
सेरेमिक है ना, हाँ। सेरेमिक गर्म होने के बाद उसकी पकड़ और ज़्यादा अच्छी काम करता है। सेरेमिक अच्छा। गर्म होने के बाद ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे ये क्या है, गर्म होने के बाद थोड़े कम बाइट, इनकी बाइट कम हो जाती है। हाँ। आपने देखा होगा, तो उसमें नहीं होता है। ये आपके ब्रेक पैड, तो आपने इसको भी पहले लग रहा घिस के लगाया हुआ साफ करके। ये उन्होंने घिसा है, आरी वालों ने ना सर्विसिंग वगैरह पे, हाँ। मैंने कभी नहीं घिसा। साफ करके लगाया, ठीक है। तो बाइब्रे के पैड्स ये वाले भी सिरेमिक होते हैं कि नहीं, नॉर्मल होता है ये तो normal है, नॉर्मल है ना? होते हैं। ये देखिए इसमें सरफेस कितना ज़्यादा है, देखिए। और इसमें मैं दिखाता हूँ, इस पर कार को देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये सेरेमिक है बिल्कुल। हाँ इस पर हाथ लगाएंगे, देखिए, ये देखिए। हाँ। और इस पर देखिए कितना प्लेन है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्लेन बिल्कुल। राइट राइट। हाँ, ये पकड़ करता ज़्यादा इसलिए। हाँ फ़र्क तो है। हाँ, तो कुछ ऐसा भी होता है कि ज़्यादा इसका जो इफेक्ट होता है कुछ 50-100 किलोमीटर चलने के बाद आता है अभी कि तो आप नहीं? लगाएंगे तो जैसे 40-50 किलोमीटर चलाएंगे तो हाँ इसका जी। बाइट ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि हाँ। पुरानी प्लेट में आप तो जब तक ये अपनी जगह बनाए। हाँ। बाकी आप चलाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको, आप खुद ही बता दोगे कि कैसा परफॉर्मेंस था इसमें। राइट। सो दिस इज़ डन। फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं। अभी मैं बाइक चला के देखूंगा कुछ 50-100 किलोमीटर, उसके बाद बताऊंगा इनकी कैसी परफॉर्मेंस है। All right, so both the front and rear brake pads have been replaced with Vestra. तो देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। I have paid about 1350 for the rear and 1300 rupees plus the labor for the front pad, which is much cheaper than the stock ones which come with the bike. I think the original Vibre pads are around 2400 rupees or 2000 rupees, something like that. So let's speed up a little and apply the brakes. ओह बहुत सही है यार ये। For sure पहले वाले से तो बहुत बेटर है। The bite is good. The braking distance has reduced a little, I think. In my opinion, these are really good. We'll test them a bit more on the highway. So that's it for today, guys. If you all liked the video, hit the like button, subscribe to the channel. I will see you soon. Till then, ride hard, ride safe, and take care of yourselves.